अदालत अटेंड हुआ है, उसके बारे में आप આજ રોજ તારીખ 11/7/2026ના રોજ નાલસાના માર્ગદર્શન હેઠળ તેમજ નામદાર મુખ્ય ન્યાયાધીશ ચીફ જસ્ટિસ શ્રી સુનિતા અગ્રવાલ મેડમ તેમજ અમારા ગુજરાત રાજ્ય કાનૂની સેવા સત્તામંડળના પ્રમુખ શ્રી એવાય કુકજે સાહેબના વડપણ હેઠળ આજરોજ જે લોક અદાલત યોજવામાં આવી છે તેમાં ગુજરાતના બધા જ 32 જિલ્લાઓમાં અને બધા જ તાલુકાઓમાં લોક અદાલતનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને ગાંધીનગર ખાતે જે આજે લોક અદાલત યોજવામાં આવી છે તેમાં MSCP મેટર 97/2006 એમાં સમાધાન થયેલ છે કે જેમાં જે ગુજરનાર છે એના વારસોને આશરે 80 લાખ જેટલું વળતર આપવામાં આવ્યું છે અને સમાધાનથી કેસ ફેસલ કરવામાં આવે છે. આ સિવાય ગાંધીનગર ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ અને તાલુકા લેવલની બધી કોર્ટોએ સાથે મળી અને લગભગ 20,000થી વધારે કેસો લોક અદાલતમાં ફેસલ કર્યા છે. એ પ્રમાણેનું અત્યાર સુધી અમને જાણકારી મળી છે અને હજી એવી આશા છે કે પક્ષકારો હજી પણ લોક અદાલતમાં મોટા ભાગે ઉત્સાહથી ભાગ લઈ રહ્યા છે અને હજી પણ આ આંકડો સાંજ સુધીમાં વધશે એવી અમને આશા છે. आज जो ये नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया गांधीनगर जिला में, हमारे जैसे अभी मैडम ने बताया करीबन 23,000 से ज़्यादा केसेस आज डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं, जिससे एक हमारी पेंडेंसी भी कम हो रही है और एक जो सुखद जो एक समाधान जो हम कहते हैं कि पार्टीज़ के दोनों पार्टीज़ के बीच में कि जो एक डिस्प्यूट था, एक झगड़ा था, उसको ख़त्म करके सभी ने मिलकर जो एक ये कदम उठाया जिसमें अपने केसेस को सेटल किया, चाहे वो कोई चेक के केसेस थे, चाहे MSCP एक्सीडेंट के केसेस थे, चाहे दूसरे केसेस, सभी ने इसमें कंट्रीब्यूट किया और जो हमें गाइडेंस मिली ऑनरेबल चीफ जस्टिस, ऑनरेबल जस्टिस कुकजे साहब और मेंबर सेक्रेटरी हेतल वैन से, उसी की तरह हमें गाइडेंस के हिसाब से गाइडलाइंस जो हमें मिली, जो डायरेक्शंस मिली, उसके हिसाब से काम करते हुए सभी ने मिलकर, चाहे वो हमारे जजेस थे, चाहे वकील, चाहे मीडिएटर्स, चाहे पक्षकार, सभी ने मिलकर जो एक प्रयास किया, उसी का ये रिज़ल्ट है कि इतना ज़्यादा केसेस हम यहाँ सेटल कर पा रहे हैं और उम्मीद है कि आगे भी यही ऐसे सभी का सहकार मिलता रहे। और एक जो हमारा पर्पज़ है लोक अदालत का कि सभी अपने जो झगड़े हैं उन्हें भूलकर मिल बैठकर बातचीत से अपने केसों को सुलझाएं, डिस्प्यूट ख़त्म करें और एक जो हमारा समाज है वो आगे कैसे तरक्की कर सके, सिर्फ अपना टाइम जो है वो आप झगड़ों में ना वेस्ट करके वो झगड़े ख़त्म करके एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर एक पॉजिटिव वे में आगे हम बढ़ते चले जाएं। तो उम्मीद है कि ऐसे ही हम आगे भी ये प्रयास करते रहेंगे और सक्सेसफुल होते रहेंगे। थैंक यू।